बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। मैं हूं आपकी टीचर आयशा और हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं मैथ्स की बुक फॉर 4+ ईयर्स और अब तक बहुत सारे नंबर्स और बहुत से इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं, सीखे हैं और कैरी आउट किए हैं। आज का नंबर भी है हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 डिजिट नंबर 16 और नंबर 16 मिलके बनता है 110 एंड 6 यूनिट से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तमाम नंबर्स को एक कहानी से रिलेट करते हैं, तो जल्दी से चलते हैं नंबर 6 की एक दिलचस्प कहानी की तरफ। अली का स्पोर्ट्स डे आने वाला था, तो उसके लिए अली को एक कैप चाहिए थी ताकि धूप से बचा जा सके। आई होप आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे होता होगा। अली एक शॉप पे गया, वहां पर बहुत सी कैप्स मौजूद थीं। अली ने उन्हें काउंट किया तो वो थी टोटल 16 यानी कि 16 कैप्स। सब की सब कैप्स के रंग बहुत ही ब्राइट और खूबसूरत थे और अली को बहुत मुश्किल पेश आ रही थी कि वे कौन सी कैप ले। उसकी बहन ने उसको मशवरा दिया कि जिस कलर का तुम्हारा यूनिफॉर्म है, तुम्हारा ट्रैक सूट है, तुम उसी कलर की कैप ले लो। तो अली ने एक ब्लू कैप सेलेक्ट कर ली और दुकानदार के पास 15 कैप्स रह गई क्योंकि पहले उसके पास 16 यानी कि 16 कैप्स थी। तो ये है हमारी बुक का पेज। इट इज सेइंग listen, say, read and write number 16. The student is expected to count and identify the number 16 through pictures or real objects. Trace and write the number 16. ये हैं वो 16 bright colored caps जो अली ने देखी उस शॉप पे। Let's count them together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 and the last one जो कि अली ने बाय की number 16। तो यहाँ पे हैं हमारे पास दो टावर्स, 110 and 6 units make number 16। इन बीट्स में से आप कलर करेंगे 16 बीट्स को। Then little explorers, it's time to explore about 16 leaves, stones or bottle caps in front of the learners. Ask them to explore the objects, touch, feel and observe and then count all together. तो आपने बच्चों को different objects provide करनी है। Let them feel by touching them and then count them. Little innovators, let the learners explore more about number 16 by scanning the QR code. Little builders, give the learners 16 sticks, straws or craft sticks. Ask them to create simple shapes such as triangle or square or make a simple design or pattern using all 16 pieces. तो आपने बच्चों को sticks, straws या craft sticks provide करनी है and let them make different shapes with them or any pattern they want to draw. Little designers, provide the learners with stickers, buttons or paper cutouts. Ask them to place exactly 16 items inside a large outline, heart, star or circle and decorate it neatly. तो आपने एक बड़ी सी ड्राइंग प्रोवाइड करनी है, उस पे कोई स्टार, सर्कल या एक हार्ट and let them decorate it with any 16 things. Little thinkers, give the learners number cards 14, 15, 16 and 17 and ask them to identify and point out to number 16 and then say the number 16 aloud. It's time to learn the formation. So 16 has 1, a straight standing line, and then 6, a curve to the left, and then make a circle and join over here. This way you can write number 6 and together it makes 16. Trace it and write it so many times. Count and write the number in numerals and words. Let's count these strawberries. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So write in numbers over here and in words over here. Count the objects and tick the correct number. Wow, some juicy pears. Let's count them together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, 11, 12, 13, 14 and 15. So tick 15 over here, and same goes with these ice cream cones and pineapples. There is a teacher's note. Guide the learners to trace and write number 16. Support them to complete the activities on the page. Help them to complete the related exercises in the activity book. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का नंबर 16. हमने नंबर 16 को डिफरेंट चीज़ों के साथ रिलेट किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनी, नंबर 16 को डेकोरेट भी किया. तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन नंबर्स की घर पे भी लाजमी प्रैक्टिस करें, रिटन भी और ओरली भी. टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.